Life's best moments are unplanned. Yes, they are. Hi guys, good morning. This is the second day in Kasol, day 5 for us. And yesterday was a very nice evening we spent at the Panjtara Cafe. क्या है ये पंचतारा कैफे? Don't worry, we'll talk about it in detail. It was super awesome and today we are back at our usual place for breakfast. बहुत awesome दिन जा रहा है. Let's see. हमारा वैसे तो कल we are supposed to leave, but let's see what's the plan. I'll keep you updated. In the meantime, enjoy the view. ऑफ लिमिट्स कैफे. और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि हम ऑफ लिमिट्स स्टे में रुके हैं और ये कैफे मोर और लेस हमारा फेवरेट गो टू प्लेस था इन कसौल. तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जाइए उसको देखिए. आई विल लिंक इट फॉर यू राइट हियर. सो इन दिस एपिसोड मैं आपको ले जाऊंगी अपने कुछ फेवरेट कैफेज जो कि कसौल मेन मार्केट एरिया में हैं. And I will take you to the Chaalal Village, which is just a short hike away from Kasol and a must visit. So stay tuned. Number 1 is the Stone Garden Cafe. अभी हम कुछ स्नैक्स लेने आए थे. लाइट चली गई यहाँ पे. इस जगह का नाम है, क्या नाम है? स्टोन, क्या नाम है? स्टोन समथिंग. अभी स्टोन व्यू नहीं, कुछ और नाम है. I'll let you know. This cafe is situated in the middle of the Kasol market. Since overall कसौल में बहुत इजरायली इन्फ्लुएंस है तो यहाँ पे आपको इजरायली, इटालियन, चाइनीज क्विजीन मिलेगा जो कि यहाँ पे भी सर्व होता है. They also have a bakery. So we are here for some grilled fish they're preparing, which was totally delicious by the way. बहुत ही chill, happy vibe है इस कैफे की. You can just come here and enjoy the peace. The music is so soulful. Number 2 on my list is the Panjtara Bar and Grill, a multi cuisine cafe famous for its parties with soulful live performances and Ensemble of the exotic cocktail. A good time guaranteed. Number 3 is the Evergreen Cafe. Overlooking the Parvati river next to the Panjtara Cafe is this amazing rooftop cafe. Come here to enjoy your sunsets and the sound of the river flowing. Number 4 on my list is the Moon Dance Cafe. On the main market road, this is another cafe where you can enjoy good food and music that will definitely be enough to spend your evenings here. Most of the cafes here have live bands on Fridays and Saturdays, and some of them will also have it on the weekdays, which is just awesome. यहाँ पे cafes local indie bands support करते हैं, music industry support करते हैं, which is another feather in the hat. आपको बहुत खूबसूरत singers सुनने को मिलेंगे यहाँ पे, and you will find yourself awestruck. क्योंकि ये सारे कैफेज आपको मेन मार्केट लेन में मिलेंगे कसौल की, so they are all easily accessible. Food and drinks in the cafes here is actually at par with the metro cities. So आपको लगेगा कि थोड़ी expensive हैं. Considering this is a party capital of Himachal, I think this is what you should expect. Just putting this out there. अब समय है आपको ले चलने का छलाल विलेज. अगर मैं आपको बोलूं कि इस पार्टी कैपिटल ऑफ हिमाचल से बस 30 मिनट चलकर आप एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां आप पानी का बहने की आवाज सुन सकते हैं और चिड़ियों के चहकने की आवाज सुन सकते हैं. यस,
छलाल विलेज एक ऐसी ही जगह है। चलिए चलते हैं छलाल विलेज। So this is the bridge that goes towards the Chalal village जहाँ हम जा रहे हैं अभी। That's the trek path. बहुत ही खूबसूरत। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का ट्रैक है छलाल विलेज का। बहुत ही सीरीन विलेज है, वहाँ पे आपको होम स्टेज भी मिल जाएंगे। बट येस, यू हैव टू ट्रैक अ लिटिल बिट टू गो टू दिस प्लेस एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो पार्किंग। बट येस, you will have the breathtaking views of the river on the left. इजी से मॉडरेट ट्रैक है। होने वाली है थोड़ी बहुत चढ़ाई, एज यू कैन सी। So let's go. ऐसे छोटे कैफेज आपको मिलते रहेंगे मैगी वैगी के लिए ऑन द वे। You will get these signs so that आप अपना रूट ना भटके। ब्यूटीफुल घर है किसी का। ये इजी हाइक है तो anybody can do it. If your fitness level is bad, then after a few moderate climbs you can do it, I feel. अगर आप बिल्कुल भी नहीं चलते हैं तो थोड़ा बहुत चल ले, but route is pretty nice. ना बहुत स्टीप है। सो यप, फ्रीडम कैफे, इट्स क्वाइट अ फेमस कैफे अराउंड हियर। बाय द वे, अब रिवर दूर हो गई है क्योंकि हम फॉरेस्ट एरिया में एंटर कर गए हैं एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स द विलेज। नाइस कैंप्स, ओम हिमालयन कैंप कैफे है ये, एंड कैंप्स यू कैन गेट कैंप्स ओवर हियर। चलो देखते हैं आगे क्या है। हाय। And we are back to the water stream. Yes. Wow. One of the best hiking routes this is, with forest on one side and river on the other. और approximately 15-20 मिनट और वॉक कर हम पहुंचेंगे मेन विलेज में, जहां आपको बहुत सारे कैफेज और होम स्टेज ऑप्शंस मिलते हैं।
अगर आपको वाटर स्ट्रीम एंजॉय करनी है तो ये तो बेस्ट प्लेस है ना, भीड़ भाड़ है ना, बैंक्स क्राउडेड है यहाँ पे। ये आ गए हम सम कैफे, होम स्टेज गाइज, lots of home stays. Bless you. यहाँ स्टे ऑप्शंस बहुत ही अफोर्डेबल हैं। 500 से लेकर के 1000 तक में आपको आराम से कोई कमरा या बंक मिल जाएगा, तो रहना यहाँ पे बहुत आसान है। अगर आप पार्वती वैली आए, डेफिनेटली आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर दिस विलेज। बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो दूसरे विलेजेस से बहुत अलग है। So we came back to Kasol for a quick lunch. Since it was our last day in Kasol, we had mixed emotions of leaving this place. So ये था हमारा लास्ट दिन कसौल में। Now we are going to go ahead, move to our next destination. But पार्वती वैली की ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। So please like and share this video and subscribe to my channel if you haven't already. Follow me on my Instagram. My handle is girl_in_the_midst. Coming up with a brand new work from home series in Manali, so stay tuned. In the meantime, you keep traveling. Stay safe. Ciao.